everyone, so let's move towards our today's topic, which is lumbar vertebrae. Now, this topic is very much easy and very short topic. In some books you will see that there are 4 to 5 pages for this short topic, but that is not much important. I will tell you the whole scenario, what is basically lumbar vertebra. Lumbar vertebra, as we all know, that vertebral column consists of some parts, some regions, not parts, regions: cervical region, then thoracic, then lumbar, then sacral, and then coccygeal. So cervical region consists of vertebral bodies, vertebral column, they are forming the vertebral column. Then फिर thoracic होती है region जिसमें 12 thoracic vertebrae होते हैं, and then after thoracic vertebrae 5 lumbar vertebrae are present. Now we all know that inside these vertebrae are forming a hollow structure, hollow canal, vertebral canal, okay, in which spinal cord is present. So that spinal cord is ended in the lumbar region, in the L1, and that ending of the spinal cord is called as conus medullaris. From that part, pia mater will extend, called as filum terminale, and from that conus medullaris part, the nerves which moves vertically downward, that are called as quadra equina. So these are the basic things we all know. Now these 5 lumbar vertebrae consist out of these 5 lumbar vertebrae, the initial 4 lumbar vertebrae are the typical one, and the 5th lumbar vertebrae is the atypical one. एटिपिकल एंड टिपिकल में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस इतना फ़र्क है कि जो एटिपिकल है यानी जो L5 वर्टिब्रे है वो थोड़ा सा उसकी जो बॉडी है वो थोड़ी वाइडर है, ठीक है. बाकी हम सारे फीचर्स एक साथ ही पढ़ लेते हैं. इट इज़ किडनी लाइक शेप, किडनी शेप्ड होते हैं ये लंबर वर्टिब्रा, और इनके अंदर कॉस्टल फैसेट नहीं होता. कॉस्टल फैसेट होता क्यों है? कॉस्टल फैसेट होता है रिब्स की अटैचमेंट के लिए. अब लंबर वर्टिब्रा से कोई भी रिब्स अटैच नहीं होती, दैट्स व्हाई नो कॉस्टल फैसेट विल बी प्रेजेंट. ट्रांसफर्स प्रोसेस विल बी लैटरली, ओके. अगर हम बात करें थोरेसिक वर्टिब्रे की या और सर्वाइकल वर्टिब्रे वगैरह की, तो ट्रांसफर्स प्रोसेस लैटरली तो होते हैं लेकिन थोड़े बैकवर्ड होते हैं, जबकि लंबर वर्टिब्रा में टोटली आप देखोगे तो टोटली ट्रांसफर्स प्रोसेस लैटरली. एंड इफ़ यू सी द डायग्राम इन द इजी मेडिकल बुक वॉल्यूम 2, you can easily see that I have made the diagram, and the transverse processes are totally lateral on the lateral side. That's the reason. The pedicle are short, the lamina is the short, but they are strong. Spine is also very short, okay. quadrangular in shape होती है जो हमारी जो spine होती है lumbar vertebra की. Transverse process, on the posterior side of the transverse process there is an elevation called as accessory process, and on the margin of the superior articular facet. अब सुने, ये जो superior articular facet है और ये जो inferior articular facet है होता क्या? Superior articular facet, as the name indicates, will be present on the upper side, and inferior will be present on the lower side. Inferior articulate करता है superior articular facet of the lower vertebra, and the superior articular facet will articulate with the inferior articular facet of the upper vertebra, okay. For example, मैं आपको समझा देता हूँ, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है. फॉर एग्जाम्पल L1 है, L2 है और L3 वर्टिब्रे, ठीक है. L1 के जो सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट हैं वो आर्टिकुलेट करेंगे T12, जो कि उसके ऊपर पड़ी हुई है, ऊपर रखी हुई होती है. तो T12 के इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट से वो आर्टिकुलेट करेंगे. जो L1, अभी मैं L1 की बात कर रहा हूँ, L1 के सुपीरियर वाले इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करेंगे, और L1 के जो इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसेट है जो नीचे हैं वो नीचे वाले वर्टिब्रा जो उसके नीचे, दैट इज़ L2 वर्टिब्रा के सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट से आर्टिकुलेट करेंगे. आप कोई भी डायग्राम देख लें, इंटरनेट कर लें, इंटरनेट से डायग्राम देख लें, यू विल इजीली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. So basically the margin of the superior articular facet is called as mammillary process, okay. Now this was the whole topic, but remember, like I said, L5 is atypical lumbar vertebrae because the size of the body is greater as compared to the other lumbar vertebrae. So this was the whole topic regarding the lumbar vertebrae.
Till then, work hard, study hard, and good luck. Take care. Bye bye. Thank you.